Hello, mic test. I am so sorry you guys. लास्ट टाइम मेरी वीडियो में बहुत नॉइज़ की प्रॉब्लम थी और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मेरी पहली वीडियो थी तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट. और मुझे ये भी कहा गया था कि मुझे दोनों लैंग्वेजेस में बात करनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी. तो मैं अब से ये भी ध्यान रखूँगी, मैं इंग्लिश में भी बात करूँगी और हिंदी में भी. सो वेलकम बैक टू माई चैनल. आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है. और आज मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग लुक क्रिएट करने वाली हूँ. बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं जानने में कि फॉरएवर 52 इतना एक इमर्जिंग ब्रांड है और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं. हम बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट्स को देखते हैं यूज़ करते हुए, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या वो प्रमोशंस हैं, वो पेड है क्या नहीं है. तो इसीलिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं. मैंने अपनी स्किन ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है, वही सेम स्टेप्स जो लास्ट टाइम हमने किए थे. और अब बारी है उस प्रोडक्ट की जो कि बहुत सारे बड़े मेकअप आर्टिस्ट को हमने यूज़ करते हुए देखा है. और आई जस्ट रियली वांट टू नो व्हाट द हाइप इज़ ऑल अबाउट. एंड इट इज़ दिस Ultra HD foundation from Forever 52. It's in the shade FLF 013. If you can see that. और it is supposed to be a full coverage foundation. ये एक full coverage foundation है ऐसा दावा है. तो इसलिए मैं आज कलर करेक्शन नहीं करूँगी. I would really want to see कि क्या ये वो काम करता है जो ये कहता है कि ये करता है. So let's see. I will link everything that I bought from Forever 52 or any of the tools that I bought down in the description. और मैंने आज जो कुछ भी यूज़ किया है और जो भी, चाहे वो Forever 52 से हो या नायका से हो या कहीं से भी और हो, कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई टूल, brushes, everything I will just link down below in the description. मैंने ऐसे ही लास्ट वीडियो में भी किया था. और आई विल क्विकली अप्लाई दिस एंड कम बैक. मैंने फाउंडेशन लगा लिया है और मेरे डार्क सर्कल्स और जो फेस की डार्कनेस थी वो तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अब नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ कुछ मेरे पिंपल्स के निशान थे जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी यहाँ हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं. ओके, अब फाउंडेशन तो हो चुका है. सो लेट्स स्टार्ट विद कंसीलिंग. और कंसीलिंग के लिए मैंने बहुत लोगों को यूज़ करते देखे हैं ये Forever 52 की फाउंडेशन स्टिक्स जो हाईलाइटिंग और कंटूरिंग के लिए यूज़ करते हैं. दीज आर क्रीम बेस्ड. आई स्वॉच एंड शो यू. दिस is a dark shade and this one is the lightest. This is the darkest, this is the lightest, and the darkest shade is called Spelt. And the lightest one, it's called Oats. So I'm quickly gonna swatch and show you guys. I'm swatching Oats. This is what Oats looks like, and this is what Spelt looks like. These are both cream based. And let's start with highlighting first. ब्लेंडिंग माई हाइलाइटर नाउ. और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने जो ये एरिया है और जो ये एरिया है इसको थोड़ा सा शार्प छोड़ा है. वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये एक आर्ट का रूल होता है कि जब भी आप शेड करते हैं और अगर आपको ब्लैक कलर को या डार्क कलर को ज़्यादा उभारना है तो उसके लिए आप उसके आसपास वाइट का जो कलर है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें तो वो ब्लैक जो है वो और ज़्यादा ब्लैक दिखाई देता है. सो द शेड दैट वी हैव फॉर कॉन्टोर, इट्स नॉट टू डार्क विच इज़ काइंड ऑफ फाइन फॉर माई स्किन टोन, लेकिन दिस इज़ द डार्केस्ट टोन. सो इफ़ यू आर अ डार्कर शेड
दिस विल प्रॉबली बी वेरी लाइट फॉर यू। तो ये लाइट कलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा शार्प छोड़ा है ताकि मेरा जो कॉन्टोर मैं भी करूँगी वो और ज़्यादा दिखाई दे। सो आई विल जस्ट क्विकली अप्लाई इट एंड शो इट टू यू। Blending them. Do you see my cheekbones which did not existed? अब हम यूज़ करेंगे Forever 52 का Wet and Dry Compact. I have it in the shade Natural. And I'll be using it with a brush or it's just basically to set, and I don't think इसके कुछ ऐसे अलग reviews हो सकते हैं possibly, but I'll just put it up. अब मैंने जब अपना base set कर लिया है, so before going on to my eyes, I'm gonna do the rest of my face first. तो पहले मैं उस product को use करूँगी जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था. So I'll be now using their Spotlight Blush palette. I am so in love with the colors of that blush. This is the palette. Look at the goddamn colors. Aren't they just so pretty? Like so damn pretty. I really want to use this one and this one and even this one and even this one. I want to use all of them. So I'll just swatch a few for you. They are creamy. Okay. A very unexpected formula. These are the 5 colors that I just tried. Okay, so I'm gonna dip my brush into 3 colors. I want to go with these 3. I'll quickly take my blush brush and dip it into 1, 2 and 3. Dust off the excess amount. I am done with applying the blush. So yeah, I like the blush. It's pretty nice. It's very intense. For now, we're gonna use their loose highlighter. This is a product. This right here. Can you see it? I'll link it down below. Just gonna take teeny tiny bit in the cap and use it with my brush. So I'll quickly apply and come back. Done with my highlighting. I very much like the highlighter. It is pretty much like Colourpop's Parasol. It's just in powder form. It's the similar kind of look, I'd say, but it can go a little out of hand if you are not very much habitual of using loose highlighters. I would rather suggest you to use a liquid highlighter or a cream based highlighter or a normal pressed powder highlighter, but a loose powder can be a little too much to handle. I would not suggest for a beginner to use this. That's my point of view, at least. I would want to start with my eyes now, and for my eyes I have 3 things today. One, I have this palette from Forever 52. It looks like this. It is their Magnificent eyeshadow palette, and looks like this. It's got pretty nice color. The second palette that I have is their Diamond Dusk palette. This is the palette.
And then I have the Magnificent liquid eyeshadow. It is very good, very good. This is the first product that I ever used from them. I'm gonna do one eye on the camera and the other I'll do off camera. This is the eye look that we will be creating today. How do you think it is? I've done my eyebrows and my eye makeup, my liner, my eyelashes, everything is done. Now I'm quickly gonna show you all the shades that I used. So I firstly used this shade. It's a matte white translucent shade. I used it all over my lid to set the foundation and the cream that's present there. Then I used this shade mixed with this shade. These two shades I used for my transition shade in my crease, and then I went to this Magnificent palette. Then I used this green color to give myself a cut crease, if you can see, if you can make it out. And then I used this Magnificent liquid eyeshadow just in the center to make it pop out. Then we go into the Forever 52 eyeliner and I gave myself a little wing. So this is the eyeliner, and after I did my eyeliner I went in to the waterline. I used this Forever 52 eye pencil in blue. I will swatch it for you. This is the blue. It's like a very royal blue. I really like this color. The name of the shade is F517. I will link it down below. And then I went with the Super Volume mascara. It is pretty. Look at the wand. It's like it can go in the really in corners of your eye. So I went in and I did that. And for my lower lash line, I did not have a purple shade. I just wanted a purple tint because just blue was looking a little too much. So I went into my Revolution palette and I used this purple right here and mixed it a little bit, and that is all that I did with the eyes. And then I went back to the Stardust palette and I used this shade here, this one, in my inner corner here. So I'm quickly gonna do it and show you how I did what. Now I'm going to do my eyebrows. I'm gonna use this brow definer. It's in the shade Cocoa. So I'm only gonna draw a few strokes because it is a very dark color. I can show you the color. It is this color. It is very much
similar to the shade of my eyebrow. I am done with my brows too. Now I'm quickly gonna do my lip. I'm using this lipstick, Velvet Matte Lipstick. It's in the shade FT008. I'm gonna link it down below. I am done with today's look. How do you think it is? Tell me, comment down below, let me know how do you like it, and give it a great big thumbs up, and also tell me what you want me to do next. Subscribe to my channel, and that is all for today. See you till next time. Bye.